Assalamu alaikum my dear students. Welcome in online biology class. Hope you all are fine and right now busy in preparation of test. So as you are aware about that we are dealing with the chapter, and in this chapter we are dealing with the food content or the microbes. So the chapter is enhancement of food production, and in this chapter till now we have completed many important parts like microbes in sewage treatment, microbes in biogas plant, microbes used for the production of vitamins as well as antibiotics, microbes used in the production of gibberellins, as well as microbes used as the biological control agents. So today again I am here with some important part, and it is the reduced syllabus. As in every video I am giving you, so it is a recall for you people that this part is a reduced one. That is the reason in every video I am keeping this for you people as a reminder that this part is reduced out of this chapter, so you are not supposed to prepare for this content. So today we are going to deal with the part that is a role of microbes as a fertilizer. You are aware about that fertilizers are very important and necessary for the better growth of plants or better growth of crops. So that is the reason farmers are using fertilizers, but for the security purpose fertilizers are not good. You are also aware about, last lecture में भी हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं. So here we will study about the biofertilizers. It means the fertilizers that is available in the living form, or what are the different living objects farmers can be utilized as a fertilizer. So that is called as the biofertilizers. So let's talk about the fertilizers first. Fertilizers are the nutrients which are necessary for the growth of plants and thus for the productivity of cultivated plant. Use of fertilizers for increasing productivity is one of the aspects of green revolution. Fertilizers are classified on certain basis, like we can say they are classified as inorganic, it means based on chemical, and organic, that we can say the biological source. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है उसकी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो complete, incomplete, soluble, insoluble, but here we will first focus on the inorganic as well as the organic. It means the chemical source as well as the biological source. तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स आप आपके लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हों, जैसे कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज के नाम और उनके पिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, देन ब्लू ग्रीन एल्गी, देन माइक्रोराइजा एंड ऑल. तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये यूज़ होते हैं एज बायो फर्टिलाइज़र. तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइज़र दैट इज़ द केमिकल फर्टिलाइज़र. सो दे आर द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स and they may produced in factories. So as name it is chemical substances इसके अंदर ऐड होते हैं, तो there might be a chance के plants को इससे कुछ हद तक खतरा हो सकता है. If it is used in excess, so it may give harm to the plant. Now if we will talk about the organic fertilizers, so they are the biological in origin and include farmyard manure, that is also called as FIM, compost and green manure. So use of these fertilizers increase the fertility of the soil. So nowadays for better and sustainable agricultural production, farmers are using biofertilizers and practice organic farming. So that is the reason biofertilizers are mostly used. तो इस तरीके से हम लोग जो है वो उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, मतलब के केमिकल बेस्ड एंड द प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड हम लोग बोल सकते हैं. तो जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैटेगरी और हो जाती है फर्टिलाइजर्स की, लाइक स्ट्रेट फर्टिलाइजर, प्लांट और एनिमल बेस्ड फर्टिलाइजर, देन एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट एंड द मिक्स्ड फर्टिलाइजर, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वी कैन से. So if we will talk about the importance of fertilizers, so why to use fertilizer first? So first reason is to increase the harvest yield. जैसे कि आप लोग सब जानते हो फार्मर को ज़्यादा yield की अर्ज होगी for better to make money we can say. सो एवरेज इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड बाय 20 to 30%, इसका इस्तेमाल से 20 to 30% तक क्रॉप की यील्ड जो है वो बढ़ जाती है.
Algae based fertilizers have improved yield in rice at rest ranging between 10 and 14%. ये एक इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर algal बेस्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. Improving soil structure, it means that use of microbial biofertilizer improves the soil structure by influencing the aggregation of the soil practices. तो इस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को soil की क्वालिटी भी इससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फॉर बेटर वाटर रिलेशन, और वी कैन से जैसे कि आर्बास्क्यूरल माइकोराइजा एक टाइप है बैक्टीरियाज की, और इसकी कॉलोनीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं. सो इट इंड्यूसेस ड्राउट टॉलरेंस इन प्लांट बाय इम्प्रूविंग लीफ वाटर एंड टर्गर पोटेंशियल, मेंटेनिंग स्टोमेटल फंक्शनिंग एंड ट्रांसपीरेशन एंड इंक्रीजिंग रूट लेंथ एंड डेवलपमेंट. तो इस तरीके से वाटर रिलेशन जो है वो बढ़िया हो जाता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि माइकोराइजा की जो कॉलोनी है they are having drought tolerance effect, so that is the reason it is also useful as a fertilizer. Now we will talk about the benefits of biofertilizers. so जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, yield इंक्रीज हो जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज इफ वी विल यूज द केमिकल फर्टिलाइजर सो दे मे लीड टू पोल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड ग्राउंड वाटर, और सॉइल में बिकम एसिडिक. सो दैट इज द रीजन nowadays farmers are avoiding that chemical based fertilizers. So it stimulates plant growth, it activate the soil biologically, यानी कि naturally soil activate हो जाती है. It restore natural soil fertility. It also provide protection against drought and some soil borne diseases, जैसे कि अभी हम लोगों ने माइकोराइजा की कॉलोनी के बारे में देखा कि how they are drought resistance. So that is the reason overall it is having a very good impact on the agricultural field. That is the reason nowadays farmers are preferring organic fertilizers as compared to the inorganic fertilizers. More if we will talk about the biofertilizer, so its use is cost effective and eco friendly, जैसे कि nature friendly हम लोग बोल सकते हैं. so they play a vital role in maintaining a long term soil fertility and sustainability. तो overall इसका कोई भी बुरा असर environment पे नहीं पड़ता है. that is the reason use of biofertilizer is the most effective and or cost effective also we can say. Now we will talk about the types of biofertilizers. So on the basis of nature and function, biofertilizers are divided into certain groups. So ऐसे तो जो है वो 5 groups आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, but today we will going to deal with 3 basic groups, that is for nitrogen, that is nitrogen fixing biofertilizers, then phosphate solubilizing biofertilizers, and for compost making fertilizers. So that is the for phosphorus and for enriched compost, that is the only the compost making fertilizer. तो ये 3 fertilizers की type, biofertilizers की type हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. So first one is the nitrogen. For nitrogen, or we can say that the nitrogen fixing microorganisms का इस्तेमाल करके जब biofertilizers बनाते हैं तो that is the nitrogen base. So let's have a talk on the nitrogen fixing organism. So the nitrogen fixing microorganisms which convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds like nitrates and nitrites वाया अमोनिया. आप लोग ये बेसिक आपके लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस. देयर आर 2 टाइप्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इस बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो देयर आर सर्टन फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियाज एंड अनएरोबिक बैक्टीरियाज. सो व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स हियर, यू कैन सी द नेम्स. एजिटोबैक्टर है, बेजरेंकिया है, कैलैप्सियलिया, साइनोबैक्टीरिया. सो दे आर द एरोबिक बैक्टीरियाज. देन एनएरोबिक में भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोस्ट्रोडियम है, सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. So nitrogen fixing microorganisms, they are also called as disotrophs. Now what are these disotrophs we will see. बस हम लोगों को ये देखना है. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो दैट रेड और ग्रीन कलर के यहाँ पे आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर द डिफरेंट बैक्टीरियाज और द बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हम लोग बोल सकते हैं, जिसको एंडोफाइटिक बैक्टीरियाज, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. दैट इज द रीजन, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे आपने देखा होगा कि राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल में मौजूद होता है, जैसे कि द
जो प्लांट्स होते हैं, लाइक मेथी का अगर प्लांट हम लोग बात करेंगे तो उसकी रूट्स में छोटे छोटे बॉल्स बने हुए होते हैं, सो दैट इज़ द नोड्यूल्स। तो वहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और वो अपना काम करते हैं एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द डाइजोट्रॉप्स। सो डाइजोट्रॉप्स जो है उसके कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो फ्री लिविंग बैक्टीरिया लाइक एजिटोबैक्टर, rhodosudomonas fix atmospheric nitrogen and also protects nitrogenase enzyme that is sensitive for the oxygen. So they produce oxopolysaccharide which retains water and prevents diffusion of ऑक्सीजन इनसाइड सेल ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए। सो एसिडोबैक्टर हैव extendingly high rate of respiratory metabolism, thus preventing oxygen retention inside the cell. So blue-green algae are of two type, that is the heterocysts और नॉन हेटेरोसिस्ट। सो इस तरीके से जो है वो डाइजोट्रॉप्स मिलकर काम करते हैं एंड इन डाइजोट्रॉप्स में दो टाइप आ जाती है। द वेरी फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक, दैट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द अनदर वन इज फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमको मिलती है राइजोबियम की। इसके अलावा भी एनाबीना, फ्रैंकिया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। So these are always associated generally with underground parts, that is roots of the higher plant. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि how small ball like structure it is attached with the root. So these bacteria can infect the roots of the leguminous. जैसे कि मैंने आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो leguminous plants की स्पेशलिटी है. So plants leading to the formation of lumps or nodules where the nitrogen fixation take place. So about 90% of the atmospheric nitrogen will get fixed by these kind of bacteria that are called as nitrogen fixing bacteria. So symbiotic nitrogen fixation occurs in plants that harbor nitrogen fixing bacteria within their tissues. So the best studied example in the symbiotic association between roots of leguminous plants and bacteria for the genus Rhizobium. So this association results from the root nodule in legumes. Root nodule is an enlarged multicellular structure on root, and in this legume Rhizobium is having association and it will fix 25 to 60 kg of molecular nitrogen annually. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि Rhizobium bacteria how crucial role it is playing in the process of nitrogen formation, we can say. So that is the reason this process is very important. Now if we will talk about non-symbiotic nitrogen fixation, so fixation carried out by free living microorganism, or it is also called as aerobic and anaerobic and blue green algae. तो इस तरीके से नॉन सिम्बायोटिक हो जाएगा ये. सो इन दिस वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स. सो स्पेशल टाइप जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, लाइक फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है एजिटोबैक्टर बेजिरेंकिया, एंड फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम, एंड फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है क्लोरोबियम रोडोस्यूडोमोनास, एंड फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं डीजल फोविब्रो एंड थायोबैसिलस. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंसिडर्ड एज फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो इन दिस वे दे आर प्रोड्यूसिंग और दे आर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. Next we will talk about the phosphate solubilizing biofertilizer, that is our second type. So ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं that will be having the capacity to solubilize the insoluble inorganic phosphate. तो यहाँ पे जो फॉस्फेट और जो फॉस्फरस कंटेंट होगा सॉइल के अंदर उसको सोल्यूबलाइज करने की ये ऑर्गेनिजम्स में कैपेसिटी होती है. सो इफ वी विल टॉक अबाउट द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स, सो मेनी बैक्टीरियाज बिलोंगिंग टू द बैसिलस स्यूडोमोनास, Flavobacterium, Micrococcus, Streptomyces and fungi belonging to Aspergillus, Penicillium and Trichoderma efficiently solubilize insoluble phosphate of rock phosphate group. So these organisms secrete organic acid that solubilize insoluble phosphorus added to the soil, which then becomes available for the plant absorption. So as एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो phosphate group है that is not readily absorbed by the plant, तो उसका कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है. तो ये फॉस्फरस जो है वो फॉस्फेट
को फॉस्फोरस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कन्वर्जन का काम करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये फॉस्फेट का भी सोल्यूबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरियाज दैट आर solubilizing the phosphate and hence they are converting into phosphorus and then plant will get absorbed or it will get absorbed by the plant and ultimately it is utilized by the other organisms. Next one is compost making biofertilizers. So it is a fact that compost is very essential for the better growth of plant. So there are certain bacteria that are utilized as the compost and they are help the plant or they are help the farmers to prepare the compost. So these bacteria are called as compost making biofertilizers. So first of all we will see what is the importance of biocompost. So it is eco-friendly organic fertilizer prepared from the sugar industry waste material which is decomposed and enriched of various plants and human friendly bacteria and fungi. It consists of nitrogen, phosphate solubilizing bacteria and various useful fungi like decomposing fungi, Trichoderma, Viridia, which protects the plant from various soil-borne disease. It also increases soil fertility, which results to a good quality products to the farmer. That is the reason biocompost is playing a very crucial role in the good growth of the plant. So that is the reason farmers nowadays is very much they are very much useful of utilizing such kind of biocompost. They are habitual actually of utilizing such kind of biocompost. तो ये biocompost actually किन bacteria से मिलकर बना है that we will see. So if we will talk about the composting, so composting is a natural process that turns organic material into a dark rich substance called as compost or humus. So the composting process is depend on microorganism to break down organic matter into compost. So there are many type of microorganisms found in active compost such as bacteria, fungi, actinobacteria, protozoa and rotifers. So ये protozoa and rotifers they are playing very crucial role in converting the organic matter into compost. So whatever is the left out material or we can say the substances that is called as compost or humus बनाने के लिए we have to depend on certain microorganisms. What kind of role they are playing? So they are breaking the organic matter into compost. तो final जो compost होता है उसके conversion के लिए ये microorganisms जैसे कि fungi है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एक्टिनोबैक्टीरियाज है, ये सारे बैक्टीरियाज दे आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे जो है वो डार्क कलर का हमको कंपोस्ट दैट इज़ रिच इन ह्यूमस कंटेंट हम लोग बोल सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमको वो मिलता है. सो दैट इज़ अबाउट द कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स. So I think this much is enough for today. We have seen the 3 different types of microbes as a biofertilizer. 3 कैटेगरी उसकी हम लोगों ने आज देखी. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग द अनदर 2 कैटेगरी दैट इज साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर एंड फंगल बायोफर्टिलाइजर्स. तो ये चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो वट एवर आई टॉक टुडे इज़ वेरी सिंपल. सिंपली अगर आप उसको अच्छे से रीड कर लो then only you will be able to understand it very well, I can say. So please go through the content thoroughly, just read it like a story. Definitely you will be going to understand, and still if you'll be having any doubts, so you just contact me or come here to solve your doubts. Okay, so inshallah we will meet next time. So till that, take care. Assalamu alaikum.